Live your life within the moment, and don't go wait until. Hi guys, I'm Kritika. So in today's video, I'm gonna talk about few of my favorites, and I think मैं पहले ऐसी videos करती थी. I used to talk about my favorites, and I stopped doing them for some reason. So I'm gonna start today. So I'm gonna list 10 things that I'm obsessed with, and I don't know about you guys, but मैं ना बहुत ऐसे nosy सी हूँ. मैं लोगों की लाइफ में उनकी पर्सनल उनकी चीज़ें क्या अच्छी लग रही होती हैं, वो कौन से किचन में अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर कौन सी चीज़ें वो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. मुझे बड़ा मज़ा आता है और उसके पीछे की स्टोरी सुनने में बड़ा मज़ा आता है. एंड आई समहाउ एंड अप ordering that or buying that book or listening to that song because आपको लगता है कोई और सुन चुका है शायद वो अच्छा होगा, या मतलब आपकी चॉइसेस ना नैरो डाउन हो जाती है, थोड़ा सा दिमाग कम लगाना पड़ता है. सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into this video. So the first thing that I'm gonna talk about is books. I love books. I think I'm always looking for audio books. Yeah, physically I love reading books. I don't really read fiction that much, but I'm always into improving myself, self-improvement books. So this book called Keep Going by Austin Kleon. I hope I'm pronouncing the name right. 10 ways to stay creative in good times and bad. So what it looks like. If you're just getting into books या फिर आप सेल्फ हेल्प में अभी आप जा रहे हो ना, आई थिंक दिस इज द ईजिएस्ट बुक दैट यू कैन रीड. एंड इसमें कोट्स वगैरह हैं एंड आर्ट वर्क है, ड्राइंग्स हैं, वेरी वेरी इजी टू रीड. एंड आप पे ना इतना हैवी नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है आपको पूरी बुक फिनिश करनी है अच्छे से. एंड छोटे छोटे चैप्टर्स है बट यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. सो आई एम गोना शेयर लाइक 2-3 स्निपेट्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई लव अबाउट दिस बुक इज दिस गाय ऑस्टिन. उसने फर्स्ट जो चैप्टर है उससे पहले ये लिखा हुआ है दैट आई नीडेड टू रीड दिस बुक, इसलिए मैंने बुक लिखी है, विच इज द बेस्ट थिंग. आई थिंक द फर्स्ट chapter is take one day at a time. I think we all need to learn that, and I'm always like trying to improve myself and thinking about the future, or maybe you think about the past. इसमें यही दिखाया गया है कि if you could do one thing for the rest of your life, अगर आप एक मूवी है ग्राउंड हॉग डे, मैं इससे चेक करें गलत ना बोले उसलिए, तो उसमें उसने एक सिनेरियो बताया था कि वो बंदा स्टक होता है उस सिनेरियो में और उसका एवरी डे इज सेम. सो इफ यू आर स्टक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आपका डे सेम पैटर्न में रोज चलेगा, तो आप कौन सा ऐसा पैशन या कौन सी ऐसी चीज करना चाहोगे जो अगर आप रोज भी करो यू वोंट माइंड. एंड आई थिंक आई लव डूइंग व्हाट आई डू. किसी चीज के लिए आपको इफ यू डोंट गेट पेड फॉर इट, विल यू स्टिल डू इट? दैट्स हाउ यू लाइक फाइंड योर पैशन. मतलब सिनेरियोज है ऐसे, लाइक दैट्स व्हाट आई हैव रेड. सो टेक वन डे एट अ टाइम. द नेक्स्ट वन इज मेक लिस्ट. आई लव मेकिंग लिस्ट, एंड आई थिंक डे बिफोर yesterday, I'll keep the pictures here. Day before yesterday I found my old notebooks and I can't even tell you, मैं like 12th के बाद से I prepared everything. Like this is what I have to do, this is my goal, and I have surpassed those goals only because I wrote them down. And आप subconsciously ना, if you're writing something down, scientifically it's proven कि वो 70% ज़्यादा effective होता है वो गोल होने के लिए. So love that. And last but not the least, एक और चैप्टर था जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा था. एयरप्लेन मोड कैन बी अ वे ऑफ लाइफ. जैसे हम प्लेन में होते हैं ना, वी स्विच ऑफ एवरीथिंग, सारे फोन वगैरह कुछ नहीं होता, और आप एक होल में होते हो और हम वहाँ से तभी फ्लाइट के बाद बाहर निकल सकते हो. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू डू दैट फॉर अर क्रिएटिव सेल्स ऑल्सो, कि आप सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मैक्स, अगर आप सब चीज़ों से दूर हो सको एंड यू जस्ट बी विद योर सेल्फ, ईदर मेडिटेट, डू समथिंग क्रिएटिव, और जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ. आई थिंक हम ऑटो पायलट पे हमेशा चल रहे होते हैं और हमें कभी रियलाइज ही नहीं होता, लाइक लाइफ इज गोइंग, एंड आपको रियलाइज होता है वो 1 साल निकल गया, वो इतना टाइम निकल गया. सो दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस बुक. काफी डिस्क्रिप्शन हो गया इस बुक का. सो द सेकंड थिंग दैट आई एम लविंग इज फाइंड योर हैप्पी प्लेस. They have amazing products and they have kindly sponsored this portion of the video. So I love this color. First of all, this is actually my favorite color. किसी को पता होगा, I think मैं बहुत जगह mention कर चुकी हूँ ये, but I love teal color. Especially मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे को कोई चीज़ calming तब लगती है या तो ocean vibes होती हैं, ऐसे spa वगैरह वाली feel होती है ना. So whenever I'm alone or whenever I want to pamper myself, I take like full 45 minutes to 1 hour to pamper myself. So that includes what? Scrubbing your body. I've actually used the product and it's really nice. It makes your skin super smooth, and also scrubbing is really important if you want to get rid of strawberry skin. So yeah, I've used this and the smell is so amazing. It's so refreshing and therapeutic, and plus I'm a beach person, so I love me some ocean vibes. And then we have the body butter. I was never the person जो ऐसे regularly ना अपनी body को pamper करता है, but the more I grow older, I've realized that you need to take care of your body, and especially moisturizing your body. That's not superficial, that's just taking care of yourself. And what helps is the fragrance. The fragrance is amazing, and especially I think the best compliment is when someone compliments, oh you're smelling great. It feels like you're taking care of your body. Maybe that's twisted, but I don't know, you respect that person even more कि इसने अपनी body और अपने आप को care करने के लिए ज़्यादा time दिया है. So I love that. Also I have this
candle right here. Then we have the body wash also, and obviously it helps that it's in my favorite color. Also guys, it's newly launched in India. They're a new brand, show them some love. And yeah, now we're moving on to the next. So the third thing that I'm loving right now, not my phone but a few apps that I'm going to talk about. So the first app, मैंने कल एक reel डाली थी and a lot of people asked me which filter you've used. So the app is called HUJI Cam, HUJI, and उसमें ना काफी cool effect हो जाता है, ऐसे vintage सी vibe आ जाती है. So I like that. And the app that I use the most for my pictures or videos is Tezza app. It's the best. मैं पहले VSCO use करती थी, VSCO, but now I've started using Tezza, and they have amazing filters और उसमें बहुत सारी चीजें हैं like blur effect, grain effect, different filters, camera presets, and काफी अलग filters है. मतलब ये 3-4 वाइब भी नहीं है, बहुत different वाइब है, and I love that. So for video editing, if you are editing on your phone, I think Inshot is the best app. उसमें सब कुछ है, like literally from effects to speed ramping, और जो भी चीज़ें आपको एक proper Final Cut Pro या Adobe वगैरह में मिलेंगी ना, एक shorter form में आपको एक phone app में जितना best आप use कर सकते हो, I think Inshot is the best. So the next thing, prepping is the most important thing, and मैंने अपनी दिवाली मेकअप वीडियो में भी यूज करा था. This Neutrogena Bright Boost Illuminating Serum, it's amazing and actually it definitely brings a change to your face. ऐसे literally ऐसे लगता है that आपने कुछ एक्सेप्ट सीरम भी कुछ लगा रखा है अपने फेस पे, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग और इल्यूमिनेटिंग लगता है, जो इसका नाम है वही लगता है. एंड इट्स एक्चुअली एम्प्टी, खत्म भी होने वाला है. आई एम गोना बाय अ सेकंड बॉटल. दैट्स हाउ यू नो आई लव द प्रोडक्ट. एंड देयर इज वन मोर प्रोडक्ट बाय संडे राइली. दिस वन इज द फेस ऑयल एंड देयर इज वन सीरम दैट आई डोंट हैव विद मी राइट नाउ. आई कीप अ पिक्चर, बट इफ आई हैव टू इन्वेस्ट इन वन प्रोडक्ट संडे राइली का, डेफिनेटली गो फॉर द सीरम. ऑयल को मैं फिर भी 6.5 आउट ऑफ 10 दूंगी, but serum like 9.5 out of 10. It's amazing. Definitely try that out. So the next thing is dry shampoo. If you are lazy like me and sometimes you don't want to wash your hair and you feel like it's too much, और ऐसा होता है ना, कभी-कभी मैं अपनी लाइफ के आउटिंग्स मैनेज करती हूँ अपने हेड वॉश के हिसाब से कि आज मैंने हेड वॉश करा, आज मैं बाहर जा सकती हूँ. But worry not, we have dry shampoo. This is from Batiste. I actually love the brown one because वो मेरे हेयर पे ना, I think वो white cast नहीं छोड़ता है, वरना अगर आप ये यूज करोगे ना white cast छोड़ता है. One thing that I've learned about dry shampoo is मैं पहले क्या करती थी, I used to take out sessions and मैं एकदम से रब कर देती थी. You have to leave it for some time, जैसे 5-10 मिनट छोड़ दो, do your makeup and उसके बाद rub it in. काफ़ी ऐसा होता है ना, जैसे आपके फ्लैट हेयर हो जाते हैं, उससे वॉल्यूम भी आ जाता है, and especially अगर आपने हेड वॉश नहीं करा है तो it makes up for that. So yeah. Next up, I'm gonna talk about silver earrings. So if you have been following me for some time now, you know I love me some silver jewelry. So the next thing that we have is silver jewelry. This one is from a brand called Not Me Cute, and this one is from Iron Accessories. Both of them are local brands. Shop them, support them. I think मैंने पूरी नवरात्रि सीरीज में ये 2-3 बार रिपीट कर लिया होगा, and this I've been obsessed with. मैंने एक recent वीडियो में अभी जो करी थी Get Ready With Me, उसमें भी डाला था. I love these earrings and I think silver jewelry can lift up anything. Even if you are a gold jewelry person, definitely try out silver jewelry. Maybe you will fall in love with that. Next up is this moisturizing setting mist from Sugar Cosmetics, and I think I got this in a PR package and I randomly started using it, and I absolutely love the smell, and your makeup stays put for quite some time. मैं ये नहीं बोलूँगी काफ़ी देर तक रहता है, but I really love it, and it's very tiny. Travel वगैरह kit में भी easily आप ले सकते हो. So the next thing that we have is Dyson. I know सबको पता होगा. Although I'm not gonna lie, it's definitely on the luxurious side. If you don't want to invest in a Dyson product, you can go for Truman. They have amazing curling irons, and then Philips also has amazing straightener brush also. Talking about Dyson, I think if you can invest in a Dyson product, I think ये आपको एक तो काफ़ी टाइम तक it lasts really long. अगर आप बार-बार जाके blow-outs करवाते हो, so you can definitely save up on that. आप एक बार invest कर सकते हो इसमें, काफ़ी weirdly तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है. I think it's amazing. आदत लगने में मुझे लगता है टाइम लग जाता है, मेरे को figure out करने में टाइम लग गया था. कभी मैं dry hair से करती थी तो वो stay नहीं करते थे, कभी wet hair से करती थी तो वो stay नहीं करते थे. But you need 70% if I'm not wrong. आप इसको damp hair पे करते हो, then it works the best and it stays for like 2 days. I think I feel उसके बाद आपको retouch करना पड़ता है. So Dyson has definitely upgraded the product, and इसमें जो पहले problem थी, पहले वाले Dyson में जो मेरे पास था, ये दीक्षा का है, उसमें क्या होता था, आपके frizzy hair हो जाते थे, and उसको improve करने के लिए they have another attachment जिससे वो frizz नहीं आता है. So yeah, that's really helpful, and also it has
has a lot of attachments, so you can definitely play around with the product and see what works for you. Next thing that I'm loving right now is coffee. You guys know I love me some coffee. अगर नहीं भी पता तो अभी पता लग गया. मेरे मतलब I think I wake up and after have my सुबह का पानी वानी, उसके बाद I have my coffee and country bean की coffee ना मैंने बहुत लोगों से I've already heard कि बहुत अच्छी होती है वो. उसके different variants आए थे मुझे I think before Diwali. I tried the vanilla one and the caramel one. It's so amazing. ऐसे actually लगता है that you're drinking coffee. Like ऐसे वो होता है ना, something feels illegal कि आप ये pay करके ले रहे हो, वो घर पे बन रहा है. Taste really nice. So next up I'm gonna talk about YouTube channel that I'm obsessed with right now. It's called TheWizardLiz. And if you're someone who loves self-help direction में अगर आपको पसंद है ना, like no bullshit talk, definitely check out her channel. She talks about law of attraction, how to stop feeling sorry for yourself, and she's very direct, especially I think coming from someone अगर किसी के साथ कुछ already हो रहा है. she talks about her life also. तो अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है आपको लगता है यार oh this person can come out of it, then I can too, and you start believing in that person even more. Yeah, I love her channel and there are a lot of videos. This video will make you confident, why everyone is always obsessed with me. A lot of fun videos but self-help touch देते हुए, not in a preachy way but like fun, that you enjoy that as if you're talking to a friend. Next up, if you are someone जिसको content बनाना या फिर pictures click करना अच्छा लगता है, and if you hate asking someone to click your pictures and if you feel very awkward, या फिर आप अकेले travel करते हो, या फिर अगर आप group में भी हो तो आपको सबकी picture चाहिए, definitely check out this product called the Turn Turtle. I found this on Instagram and stick it, believe it, and मैंने अभी भी like यूज़ कर रखा है अपने फ़ोन पे. ये जो पार्ट होता है ये कहीं पर भी स्टिक हो जाता है. मैंने और दीक्षा ने एक वीडियो भी बनाई थी, हम आई थिंक प्रोमेनाड गए थे, वहाँ पर हमने वॉल पे लगा के पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी थी. सो फनी एंड इट्स फॉर 499 रुपीज़. सो वन पीस इज फॉर 500 रुपीज़. Last but not the least, I have two budget-friendly palettes. The first one is Daily Life Forever 52 palette. Love the colors. I love warm tones on my face. So if you have a similar skin tone or a similar vibe, definitely check out the palette. Guys, quick disclaimer: this is not a budget-friendly palette, but this is a nice palette. Budget-friendly palette के लिए आप Sugar Cosmetics का ये वाला palette देखिए. बिल्कुल ऐसे ad में नहीं बोलते. अब आप ये देखिए. I think this is for 799 rupees, but you get the blush, highlighter, and a bronzer in one palette. And I personally love Sugar Cosmetics के products. They're really nice. Even the lipsticks are so nice. So definitely check this out. I love ये blush का shade. It suits my skin tone a lot. So guys, that's it. I hope you enjoyed this video. So थोड़ा सा different take था on this video, but definitely let me know if you want more such videos. I can do that for you guys. And let me know which is one thing, one app, one product you're loving right now, and let's help each other out. मैं भी देखूंगी नीचे comment section में जाके what I need to download or what I need to get. So yeah, I'll see you in the next one. Bye guys.